देखो आज आम स्टार्ट करवा कम्युनिकेशन सिस्टम क्लियर। ये कम्युनिकेशन सिस्टम रू से 3 ରୁ 5 मार्क भितर आसता है क्वेश्चन। ओके देख मु गोटे क्लास रे चेष्टा कर सारिया देखा जाओ कौन हो। देख कम्युनिकेशन सिस्टम तो व्हाट डू मीन बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहले कौन ना कम्युनिकेशन मीन्स इंटरैक्शन। कम्युनिकेशन मीन्स कौन इंटरैक्शन। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम ना it is an act in which there is the transmission and reception of information is take place। तामाने मु जदि गोटे कथा कहूँ मो कथाटा को जदि तुम मैंने बुझी पारल ताहले आमर कम्युनिकेशनटा सक्सेसफुल है। जदि मु गोटे कथा कहूँ आ मो कथा को तुम मैंने बुझी पारल नहीं ताहले आमर कम्युनिकेशनटा सक्सेसफुल हो पारला नहीं। क्लियर। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन ना इट इज एन एक्ट, it is an act, it is an act in which there is the transmission and reception of information is takes place। information is takes place बुझीगला और बुझेगा। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन ना कम्युनिकेशन हूँ गोटे एक्ट जो थे कि इनफॉरमेशन रो ट्रांसमिशन आउ रिसीप्शन होता है। क्लियर। कम्युनिकेशन बेसिकली 3टा जिनस दरकार। फास्ट जिनस कौन दरकार गोटे है ट्रांसमीटर, सेकेंड जिनस दरकार कौन ना रिसीवर, थर्ड जिनस कौन दरकार चैनल। क्लियर। कम्युनिकेशन ये 3टा जिनस बेसिक दरकार। क्लियर। ओके नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो अच्छा आग टिके मु या विषय कहूँ ट्रांसमीटर रो काम कौन ना इनफॉरमेशन को ट्रांसमिट करवा, ट्रांसमिटिंग द इनफॉरमेशन। यार काम है इनफॉरमेशन को ट्रांसमिट करवा। रिसीवर रो काम कौन ना इनफॉरमेशन को रिसीव करवा। इट विल रिसीव्स द इनफॉरमेशन, इट विल रिसीव्स द इनफॉरमेशन। और चैनल है कौन ना चैनल हो जो गोटे मीडियम जहाँ द्वारा इनफॉरमेशन टा ट्रांसमिट होता है। क्लियर। चैनल हो कौन ना इट इज द मीडियम, इट इज द मीडियम थ्रू which information can be transmitted, information can be transmitted। तामाने देख मु कहूँ तुम मैंने मो कथा को रिसीव कर मुझे गोटे ट्रांसमीटर, तुम मैंने मो कथा को रिसीव कर तेणुक तुम मैंने गोटे गोटे रिसीवर। आ मुझे जो कथाटा कहूँ ये कथाटा एयर रे जाऊँगी तो एयर है आमर चैनल। बुझीगला ना बुझीगला नहीं। क्लियर। नेक्स्ट देख नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है 2 टाइप्स। कौन कौन गोटे पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। सेकेंड है ब्रॉडकास्ट, पॉइंट टू पॉइंट आ गया ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट है कौन ना जदि सिंगल रिसीवर आउ सिंगल ट्रांसमीटर भितर
कम्युनिकेशन हम दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन तामाने गोटे ट्रांसमीटर थिबो आ गोटे रिसीवर थिबो जदि एमानक भितर कम्युनिकेशन हुए दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन जस्ट लाइक मोबाइल टेलीफोनी ओके ब्रॉडकास्ट क्या कह जाए ना जदि गोटे ट्रांसमीटर थिबो कौन कहली ना जदि गोटे ट्रांसमीटर थिबो किंतु मेनी रिसीवर थिबो गोटे ट्रांसमीटर थिबो किंतु मेनी रिसीवर थिबो ताहले ताकू आमे कहंती ब्रॉडकास्ट गोटे ट्रांसमीटर थिबो कौन कहली मेनी रिसीवर थिबो दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉडकास्ट दैट मीन्स दिस इज टीवी कम्युनिकेशन रेडियो कम्युनिकेशन एगुड़ा कहला ब्रॉडकास्ट बुझीगला एपर्यंत देखी दिए नेक्स्ट एबे देखियो आमे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम रो ब्लॉक डायग्राम कौन ना देखो फास्ट किए थे ना इनफॉरमेशन सोर्स एटा हला हमरो इनफॉरमेशन सोर्स पाखरे बहुत सारा इनफॉरमेशन थाए क्लियर तो ये कौन करे ना मेसेज सिग्नल ला ट्रांसमीटर को दिए कौन दिए ना मेसेज सिग्नल दिए ट्रांसमीटर को क्लियर ट्रांसमीटर कहाँ को दिए ना चैनल को दिए चैनल को कौन दिए ना ट्रांसमिटेड सिग्नल दिए बेले बेले चैनल रे डिस्टरबेंस क्रिएट हुए चैनल रे जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुए दैट इज कॉल्ड एज नॉइज ताको कौन कहा जाए ना नॉइज बोली कहा जाए क्लियर तापर ए जो चैनल कहाँ को दिए ना रिसीवर को दिए कहाँ को दिए रिसीवर को दिए कौन दिए ना रिसीव्ड सिग्नल दिए बुझेला तो ये रिसीवर पाखु जो सिग्नल टा पाए किए पाए ना चैनल रु रिसीवर जो सिग्नल टा पाए ताकू यूज करे तो दैट इज कॉल्ड एज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन तो यहाँ हला कौन ना दिस इज आल्सो ए मेसेज सिग्नल क्लियर तो आमर कम्युनिकेशन सिस्टम टा यही आरंभ हुए और यही शेष हुए क्लियर तो एक्चुअली कौन हुए ना ये आउ थे बुझे तो देखो इनफॉरमेशन सोर्स पाखे बहुत सारा इनफॉरमेशन थाए यही बहुत सारा इनफॉरमेशन बहुत सारा इनफॉरमेशन रु जेतिकी इनफॉरमेशन दरकार ट्रांसमीटर ताकू निए तापर से कौन करे ना चैनल को छाड़ी दिए चैनल बेले बेले कौन हुए ना डिस्टरबेंस क्रिएट हुए ये जो डिस्टरबेंस टा क्रिएट हुए दैट इज कॉल्ड एज नॉइज नेक्स्ट एबे कौन हुए ना ये चैनल रु रिसीवर सिग्नल टा को निए तो बेले बेले कौन हुए ना ये नॉइज पाई बोली रिसीवर आकुरेट सिग्नल टा को पाई पारे नाही तो जते बेले ये सिग्नल टा को आकुरेट टा न पाई पारे से ताको रिकंस्ट्रक्ट करथाय कोन करथाय रिकंस्ट्रक्ट करथाय एवं यूज होवा पई ताको पठेई दिए क्लियर दैट इज कॉल्ड एज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियर एटा हला ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एटा बहुत थोर 2 मार्किया रे आसी सारछि देखि दियो
नेक्स्ट एबे देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम रो सब टर्मिनोलॉजी उपरे आमे देखिबा। क्लियर। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी कौन ना सिग्नल। सिग्नल हला कौन ना व्हेनेवर देखो एबे कौन होजी ना मु गोटे कथा कहूँ से कथाटा बहुत अल्प दूर को जाऊँगी किंतु रेडियो रे जदि जन कथबार्ता करुँची से आकाशवाणी कटक ताने से कटक रू कहूँ किंतु ओडिशा सारा को सेटा जाई पारुची केमती ना से इलेक्ट्रिकल फॉर्म को कन्वर्ट हेले आमे बहुत दूर को ताकू प्रोपागेट करी पारिबा। तो फास्ट कथा उठुची कोन सिग्नल। So what do you mean by signal? Now whenever the information is converted into electrical form, whenever the information is converted into electrical form, then it can be propagated to a longer distance, that is known as signal. Clear? Clear समस्त बुझ पारलो। जदि आमे information को whenever the information is converted into electrical form, जेतोले इनफॉरमेशन को आम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करथांती ताको आम सिग्नल बोली कहिथांती। क्लियर। ए सिग्नल हला दी प्रकार गोटे हला हमरो एनालॉग सिग्नल द्वितीय डी हला हमरो कोन डिजिटल सिग्नल। तो व्हाट इज एनालॉग सिग्नल ना द सिग्नल इन व्हिच current and voltage varies continuously with time. Current and voltage varies continuously with time, that is called as analog signal. And digital signal kono na whenever the current and voltage varies in a discrete manner with time, discrete manner re jodi vary करे that is called as digital signal. Clear। तो फर्स्ट कथा वाला सिग्नल। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कथा हला ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट हला के ट्रांसड्यूसर। सेकंड हला कोन ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर हला कोन ना इट इज एन अरेंजमेंट व्हिच विल कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। एठा हमें गोटे फॉर्म रो एनर्जी दबा वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ये कौन है जीवो अदर फॉर्म को कन्वर्ट हो हला। ट्रांसड्यूसर इज एन अरेंजमेंट व्हिच विल कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म। बुझियला। तो ट्रांसड्यूसर रो एग्जांपल दियो। तो कौन कौन ट्रांसड्यूसर अच्छी ना माइक्रोफोन हो गोटे ट्रांसड्यूसर से कौन करे ना स्पीच सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल रे कन्वर्ट करता है। क्लियर। अरे बुझेला ना बुझेला नहीं। माइक्रोफोन कौन करे ना स्पीच सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल रे कन्वर्ट करे हला। तो ट्रांसड्यूसर एग्जांपल के ना माइक्रोफोन माइक्रोफोन कौन करे ना स्पीच सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल रे कन्वर्ट करे। आउ के फोटो डिटेक्टर फोटो मीन्स इट इज रिलेटेड टू लाइट। लाइट कौन करे लाइट टा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट हुए। आउ कौन ना पिजोमेट्रिक सेंसर के पिजोमेट्रिक सेंसर ये कौन करे ना प्रेशर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर।
क्लियर समस्ते देखी दियो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आमर 3 नंबर नॉइज। देखो मु तुमको कहला बेले जदि कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करे दैट इज कॉल्ड एज नॉइज। व्हाट इज नॉइज? ना एनी अनवांटेड सिग्नल दैट विल क्रिएट disturbance during the propagation of signal, that is called as noise. नेक्स्ट देखो तो नॉइज कौन ना आमे जेतेबेले इनफॉरमेशन शेयरिंग करछे शेयरिंग करबा समय जदि कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करे दैट इज कॉल्ड एज नॉइज। तो व्हाट इज नॉइज? ना एनी अनवांटेड सिग्नल, एनी अनवांटेड सिग्नल that will create disturbance, that will create disturbance in the propagation of signal, propagation of signal, that is called as noise. ओके बुझेला जे जो अनवांटेड सिग्नल ला डिस्टर्बेंस क्रिएट करे ताको हम कोन कहतांती नॉइज बोली कहतांती। क्लियर? ओके नेक्स्ट तापर कोन देखिबा ना ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर कौन करे ना ट्रांसमीटर रो काम कौन हला ना इट विल टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सोर्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द चैनल। इंफॉर्मेशन सोर्स पाखरे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन थाए तो ये कौन करे ना इंफॉर्मेशन सोर्स पाखरु जेतिकी इंफॉर्मेशन दरकार सेति को आने कि कहा को छाड़े ना चैनल को छाड़े। बुझेला? अरे बुझेला ट्रांसमीटर कौन करे ना इट विल टेक the required information or it will take the information from the information source from the photo information source and send it to the channel. Those are required. Clear? तापर क्या आसला रिसीवर। रिसीवर कौन करे ना रिसीवर चैनल पाखरु इनफॉरमेशन गुड़ा को रिसीव करे। बेले बेले कौन हुए नॉइज पाई बोली रिसीवर पाखरे करप्टेड फॉर्म सिग्नल पहुंची थाए अर्थात भूल फॉर्म सिग्नल पहुंची थाए से ताकू कौन करे ना रिकंस्ट्रक्ट करिकी पुणी थरे यूज होगा पाई पठे दिए। बुझेला ना बुझेला नहीं? इट विल टेक द signal from the channel, it will take the signal from the channel and send it for use. Okay next 6 नंबर हला बेस बैंड। बेस बैंड कौन? बेस बैंड कहले
फ्रिक्वेंसी ऑफ ओरिजिनल सिग्नल रो जहाँ फ्रिक्वेंसी थाए आमे कहला बेले एडी जहाँ फ्रिक्वेंसी टा थाए दैट इज कॉल्ड एज बेस बैंड कहले फ्रिक्वेंसी ऑफ ओरिजिनल सिग्नल क्लियर बैंडविड्थ आमे कहला बेले केते जोरे कहते केते धीरे धीरे कहते तो फ्रिक्वेंसी रो चेंज होता है तो ये जो फ्रिक्वेंसी गैपटा रहे दैट इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ कहते कौन ना द वेरिएशन इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल कौन कहली ना वेरिएशन इन फ्रिक्वेंसी ऑफ सिग्नल दैट इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ क्लियर समझते देखी दिए कि नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट देखो केते जाइला 7 जाइला ना 8 रेंज कहले कौन ना मुझे तो कथा कहूँ मो कथाटा किसी गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंस पर्यंत क्लीयरली शुभी थाए तो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर्यंत क्लीयरली शुभे दैट इज कॉल्ड एज रेंज बुझेला तो व्हाट इज रेंज इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस it is the maximum distance it is the maximum distance up to which the signal can be propagated at its full strength clear that is called as range attenuation कहले कौन ना जिते बड़े आम दूर को जीवा ए सिग्नल रो स्ट्रेंथ टा कमी जाए तो ए सिग्नल रो स्ट्रेंथ कमी जीवा को आम कहते अटेन्युएशन तो व्हाट डू मीन बाय अटेन्युएशन कहले द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल कौन कहली ना द लॉस ऑफ strength of signal is called as attenuation clear समझते the loss of strength of signal is called as attenuation clear समझते नेक्स्ट देखिबा एम्पलीफायर कौन करे ना ये सिग्नल रो एम्पलीट्यूड को बढ़ाई दिए देखो तुम मैंने जो कह माइक्रोफोन धरके हेलो सी कौन करे ना जोर रे कहे हेलो सो एम्पलीफायर कौन ना इट इज एन अरेंजमेंट एटा हला एम्पलीफायर ये जदि आम कौन करवा ना गोटे छोटिया सिग्नल दे दबा ये सिग्नल रो एम्पलीट्यूड को बढ़ाई दबो तो व्हाट इज एम्पलीफायर ना इट इज एन arrangement which will increase the amplitude of the signal a signal ro
आम्प्लीट्यूड को बढ़े दिए। क्लियर। नेक्स्ट 11 नंबर एतिक आगे देखी दियो भल से। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो मॉड्यूलेशन कहले कौन केते जाइला 10 11 मॉड्यूलेशन आमे कैरियर वेव सहित एटा हला कैरियर वेव कहले कौन ना जे ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल को कैरी करे दैट इज कॉल्ड एज कैरियर वेव। ओके तो ऑडियो सिग्नल आ कौन वीडियो सिग्नल कैरियर वेव सहित मिसे देवा को हम कहते मॉड्यूलेशन। क्लियर। व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलेशन ना द प्रोसेस ऑफ matching the audio signal and video signal with the carrier wave सह ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल मिसे देवा को हमें मॉड्यूलेशन कहि थांती। नेक्स्ट हला डीमॉड्यूलेशन कौन एटा हला हमर कैरियर वेव रो ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल सेपरेट कर देबा को हमें डीमॉड्यूलेशन कहि थांती। क्लियर। तो व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन ना द प्रोसेस ऑफ एठी जोडे लिखि जो मैचिंग एटा लिखियो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग the audio signal and video signal from the carrier wave that is called as demodulation. Clear. Next one is repeater. Repeater कहले कौन ना इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ के ना ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। क्लियर। अरे कार कॉम्बिनेशन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर and receiver। clear। तो रिपीटर हो कौन ना कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। क्लियर। ये कौन करे ना सिग्नल रो एम्प्लीट्यूड ट्रांसमीटर कौन करे ना सिग्नल रो एम्प्लीट्यूड को बढ़े देगी क्या को दिए ना रिसीवर को देता है। क्लियर। देखी दे जिनस नेक्स्ट आम देखा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। सब बेले सब क्वेश्चन आसे ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ऊपर। देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। एक्चुअली हमरो सिग्नल हला दी प्रकार। सिग्नल हला केते प्रकार सिग्नल इज ऑफ टू टाइप्स। इज ऑफ केते टाइप्स टू टाइप्स कौन कौन एक रहला ऑडियो सिग्नल दुई रे कौन हला वीडियो सिग्नल गोटे आसला ऑडियो सिग्नल
असला वीडियो सिग्नल ऑडियो सिग्नल हो चाहे वीडियो सिग्नल हो इट कैन नॉट बी प्रोपागेटेड टू ए लॉन्गर डिस्टेंस ऑडियो सिग्नल हो चाहे वीडियो सिग्नल हो ये बहुत दूर को प्रोपागेट हो पारिबो नहीं तो या बहुत दूर को प्रोपागेट करिया पाई कौन करिया दरकार इट कैन नॉट बी प्रोपागेटेड cannot be propagated to a longer distance to a कौन कहली larger distance कहीं तो या कौन केमती प्रोपागेट करवा ना या लार्जर डिस्टेंस को प्रोपागेट करने को हेले हमको फास्ट कौन करने पड़ो ना वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल या हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करिया पड़ो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर सारा पर ये बहुत दूर को जाई प्रोपागेट हो पार बुझीगला ना बुझेगा क्लियर अच्छा रीजन को रीजन ये लार्जर डिस्टेंस माने कौन ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रोपागेटेड फास्ट कथा है कौन ना this audio signal and video signal will cover wide range of frequency तामाने यार frequency बहुत high है it will cover wide range of frequency यार frequency बहुत high है तेणु करी कौन हुए ना the receiver is unable to distinguish the signal receiver कौन करिवो receiver unable to distinguish the signal रिसीवर कौन कर परिवो ना सिग्नल को रिसीव कर परिवो नहीं या माने कौन ना देखियो तुम घर तुम D2H यूज कर ना तुम जो गोटे चैनल मार से किसी आसुन डायरेक्टली होम चैनल ही देखो बुझेगा तो यहाँ है रिसीवर इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश द सिग्नल थर्ड केस है कौन ना जिते बेले माने फ्रिक्वेंसी टा अधिका है जीवो इट इज अनेबल टू रिसीव द सिग्नल बाय द रिसीवर कौन करिवो ना एते सारा सिग्नल को रिसीव करि परिवो नाही रिसीवर अनेबल टू रिसीव द सिग्नल रिसीवर अनेबल टू रिसीव द सिग्नल तापरे हला कौन ना जते बेले फ्रिक्वेंसी बिलो 20 किलोहर्ट्ज whenever the frequency below 20 kilohertz a large transmitting antenna is required large transmitting antenna दरकार पड़े बुझेला अरे बुझेला ए सब गुडा कहला प्रॉब्लम क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन रे हमें फास्ट देखिले कौन ना सिग्नल हला दी प्रकार गोटे ऑडियो सिग्नल गोटे वीडियो सिग्नल ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल आम डायरेक्टली बहुत दूर को प्रोपागेट कर या प्रोपागेट करने फास्ट आमको कन्वर्ट करा पड़ो इलेक्ट्रिकल फॉर्म को कन्वर्ट कर सारापर ये बहुत दूर को जापर या बहुत दूर को गला बेले भी प्रॉब्लम देखा दिए कारण इट विल कवर वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी रिसीवर इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश द सिग्नल रिसीवर इज अनेबल टू मैच द सिग्नल जो 20 किलोहर्ट्ज रु तलकू फ्रिक्वेंसी हो गोटे लार्ज ट्रांसमिटिंग एंटीना दरकार पड़ी थाए क्लियर ना क्लियर लगे ओके अच्छा नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आम देखा क्यारियर वेव है कौन ना क्यारियर वेव हूँ गोटे वेव व्हिच इज यूज्ड टू क्यारी द ऑडियो सिग्नल एंड वीडियो सिग्नल बुझेगा ना ओके क्यारियर वेव हूँ गोटे वेव जे ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल को क्यारी करे दैट वेव इज कॉल्ड एज क्यारियर वेव क्लियर तो व्हाट डू मीन बाय क्यारियर वेव and the wave which is
used to carry the audio signal and video signal जे ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल को कैरी करे एटा हला कैरियर वेव ये कौन करे ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल को कैरी करे दैट इज कॉल्ड एज कैरियर वेव ए कैरियर वेव रो कौन होता है ना फ्रीक्वेंसी रा फिक्स्ड होता है फ्रीक्वेंसी यार कौन होता है फिक्स्ड होता है क्लियर ना क्लियर हो ना ओके नेक्स्ट एबे कथा उठुजी मॉड्यूलेशन कहले कौन मॉड्यूलेशन कहले कौन ना ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल एबे रिसेंटली बतैली हाँ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी या कथा सुनो यार फ्रीक्वेंसी रा फिक्स्ड कार फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड ना रेडियो स्टेशन और टीवी स्टेशन एमानकर फ्रीक्वेंसी रा फिक्स्ड ओके नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन कहले कौन ना जो प्रोसेस रे ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल कैरियर वेव सहित आम मिसई दियंती दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन एटा कहते कौन मॉड्यूलेशन क्लियर नेक्स्ट आ गोटे कथा हला कौन डीमॉड्यूलेशन कहले कौन डीमॉड्यूलेशन कहले कौन जो प्रोसेस रे आम ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल कैरियर वेव रु बाहर कर दियंती दैट इज कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेशन क्लियर क्लियर समस्ते क्लियर देखि दियो नेक्स्ट देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस गला एबे देखिया क्वांटिटेटिव एनालिसिस quantitative analysis of modulation and demodulation quantitative analysis of modulation and demodulation quantitative analysis of modulation and demodulation first कथा हला modulation कहले कौन ना the mean variation in the intensity of the frequency amplitude and phase with the intensity of the carrier wave ता माने carrier wave रो intensity परिवर्तन होबा फल रे जदि फ्रीक्वेंसी हो कि फेज हो कि एम्प्लीट्यूड हो जहार भी परिवर्तन घटी थाए जेकोसी जनकर ताकू आमे कहती मॉड्यूलेशन ओके तो व्हाट डू मीन बाय मॉड्यूलेशन ना द मीन वेरिएशन इन द मीन variation in the frequency phase or amplitude of a wave
the mean variation in the frequency, phase, and amplitude of the signal of the signal with the intensity of the k carrier wave, with the intensity of the carrier wave, that is called as modulation. That is called as modulation. Okay, so modulation कहले कौन ना, the mean variation in frequency, phase or amplitude of the signal with the intensity of the carrier wave, that is called as modulation. Clear? तो यही carrier wave को हम एवरी रिप्रेजेंट करते EC is equal to EC cos omega ct plus phi. EC is equal to EC cos omega ct plus phi. ओके, ये जो EC टा हला कौन ना, दिस इज द amplitude voltage of the carrier wave. Amplitude voltage of carrier wave. तो ओमेगा सी हला कौन 2 पाई एफसी. एफसी हला कौन फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव. आई हला कौन फेज डिफरेंस ऑफ कैरियर वेव. फेज डिफरेंस ऑफ कैरियर वेव. क्लियर? क्लियर? तो एबे ए जो मॉड्यूलेशन हला केते प्रकार ना, मॉड्यूलेशन हला तीन प्रकार. कौन ना, गोटा हला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तापर आसला कौन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, थर्ड रहला कौन फेज मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन तीन प्रकार, गोटे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को आम एएम बोली कहती, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को एफएम बोली कहती, एंड फेज मॉड्यूलेशन को पीएम बोली कहती. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कौन है ना, एम्पलीट्यूडटा वेरी करे किंतु फेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे. तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ना, द मॉड्यूलेशन इन व्हिच एम्पलीट्यूड वेरीज बट फेज एंड फ्रीक्वेंसी इज रिमेन्स कांस्टेंट. जो मॉड्यूलेशन कौन ना सी वेरी करियो. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द मॉड्यूलेशन इन व्हिच एम्पलीट्यूड वेरीज बट फेज एंड फ्रीक्वेंसी इज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कौन ना, द मॉड्यूलेशन इन व्हिच frequency varies but phase and amplitude is remains constant, that is called as frequency modulation. And phase modulation कहले कौन ना, the modulation in which phase varies but frequency and amplitude is remains constant. Clear? Clear समझते देखी दियो. आवाज एतिकी. ओके.